हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 3 एडवांस फीचर्स इन एमएस एक्सेल इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। द डेटा यू एंटर इन एक्सेल इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड वर्कबुक। करेक्ट आंसर इज वर्कबुक। The columns that are used to define each part of the list in Excel are known as fields. Fields is the correct answer. C question, a function that returns the lowest value in a series, that is min function. Second question, fill in the blanks. The rows and columns collectively are called a worksheet. A database is a collection of related information. Field name is also called labels. A table is an entire database list of information. Data form is another way to enter database records. Filter options are used to view only a portion of the data. Sorting means organizing data in ascending or descending order. So students, please like and share the video and most importantly subscribe this channel. इस चैनल पे आपको कंप्यूटर बुक के सभी क्लास की सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेडशीट प्रोग्राम? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे कहते हैं? Spreadsheet programs can be used to work with numbers. That means for calculating taxes, maintaining budgets, inventories, price list, expenses and expenditures or anything else. MS Excel is a spreadsheet program. What is a database? Give an example. Database is a collection of related information. For example, an address book is a database list of names and addresses of your contacts. Define the following. So there are 4 terms. First is fields. Fields are typically the columns we use to define each part of our list in Excel. Records. Database entries are called records. Tables. Table is an entire database list of information. Form. We can use data form to enter records into a database list very quickly. How will you create database table in Excel? The answer is, select the cells containing data you want to turn into a database table. Second step, click on Insert tab. Next, click on Table and click on OK. So these are the steps to create database table in Excel. Next question, which function is used to calculate loan amount? So payment function is used to calculate loan amount, PMT function. What do you mean by goal seek? We use goal seek feature to show how we can reach our goal by adjusting one of the loan terms such as interest rate or loan amount. So G question I have skipped. G क्वेश्चन स्किप किया है। इसमें आपको स्टेप्स लिखनी है, हाउ टू क्रिएट नंबर सीरीज, डेट सीरीज, राइट। तो आप बुक में से लिख सकते हो और ये वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए इसे स्किप किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डेटा फॉर्म? डेटा फॉर्म इन a handed dialog box that we can use to type the data for each field in your table, one record at a time. What do you mean by data validation rules? How will you remove the data validation? So using data validation rules, we can set up our database table to control exactly what kind of data is allowed in the cells. To remove data validation, I will use following steps. So first step, select the data, click on Data tab, click on Data Validation, again click on Data Validation, click on Clear All and lastly click OK button. So in this way you can remove data validation rules.
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब द चैनल। दिस चैनल इज रिगार्डिंग IT Planet book of PMP publishers. Okay, so have a nice day everyone. Bye bye, take care.